Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss second para of this page number 61. तो कल हमने जो पढ़ा था क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और ये पैरा पढ़ा था. आज हम इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ेंगे पैरा सेकंड ऑफ दिस पेज. क्लास है 8th, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक है जुडिशरी, डेट 11th अगस्त 2020. तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैरा में हम ये पढ़ेंगे कि पुअर पीपल, जो हमने इस पैरा में पढ़ा था कि पुअर पीपल के लाइफ में कितनी हर्डल्स आती है, मुश्किलात आती है. इन हर्डल्स की वजह से वो जस्टिस नहीं पाते. तो अब हम आगे पढ़ेंगे. इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. The legal process was greatly simplified, and when a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues, such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners who had been kept in jail even after their punishment was completed. तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक मैकेनिज़्म को डिवाइस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जस्टिस पाए. इस मैकेनिज़्म का नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो PIL का जो मतलब है वो है प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. 1980s में PIL को डिवाइस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिल सके. रीज़न था PIL का, और अपने जो PIL इसका रीज़न ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जस्टिस मिले और अपने राइट्स को क्लेम कर सके. और जो गरीब लोग हैं वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं. उनके बिहाफ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल लेटर या टेलीग्राम डाल सकता है. इसको PIL मानकर केस लड़ा जा सकता है ताकि गरीब लोग अपने घर में ही काम भी करे और मुकदमा भी इनकी तरफ से चलता रहे, इनको जस्टिस मिल सके. तो फिर लीगल प्रोसेस को सिंपलीफाई किया गया. इसमें ये कहा गया कि कोई भी लेटर या टेलीग्राम PIL ट्रीट किया जाएगा. जो ये PIL है इसको यूज़ किया गया और बहुत सारे लोगों को जस्टिस दिलाया गया, बहुत सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया गया. एग्जांपल यहाँ पर जो बाउंडेड लेबर्स अब फ्रॉम इनह्यूमन वर्क, जो बाउंडेड लेबर्स थे इनको बचाया गया. इस कंडीशन में इनको काम कराया जाता था जिसमें ह्यूमन की उनकी जान भी जा सकती थी, वहाँ से इनको बचाया गया PIL के थ्रू. तो ये मजदूरी करते थे, इनको बंधवा बनाया जाता था. जब इनके घर में कोई बीमार होता है तो मालिक से पैसे लेते थे 2 या 3 महीनों तक. अगर ये पैसा जल्दी वापस नहीं करते थे तो इनको डबल देना पड़ता था. तो ये मालिक इसका फ़ायदा उठाते थे कि आप पैसा मत दो, सिर्फ हमारे लिए काम करो. इनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, मारा जाता था, इनको फिज़िकली टॉर्चर किया जाता था. अगर ये आवाज़ उठाने की कोशिश करते तो इनके बच्चों को भी इसी काम में लगाया जाता था. तो इनको बचाया गया PIL के थ्रू. इन प्रिजनर्स को बचाया गया. और फिर जो प्रिजनर्स थे बिहार में प्रिजनर्स थे जेल में, उन्होंने सज़ा का टाइम कंप्लीट किया था, फिर भी इनको रिलीज़ नहीं किया जाता था. PIL के थ्रू इनको भी बचाया गया. और जो MDM है that children now receive in government and government aided schools is because of PIL. और जो आप ये देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो ये MDM है स्कूल में, ये भी PIL के थ्रू लागू किया गया. तो हम यहाँ पे देखेंगे एक सर्वे है. इन 2001 द drought in Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food. Meanwhile, the government godowns were full of grains. Often this was being eaten away by rats. In this situation of hunger amid plenty, an organization called the People Union of Civil Liberties or
CL filed PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental rights to life guaranteed in Article 21 of the Constitution include the right to food. The state excused that it didn't have adequate funds were shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. تو یہاں پہ ایک سروے ہم یہ پڑھیں گے کہ 2001 میں کیا ہوا کہ راجستھان اور اڑیسہ میں ڈراٹ آیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا، تو سوکھا پڑنے کی وجہ سے شارٹیج آف فوڈ ہو گئی، غذا کی کمی ہو گئی، کھانے کے لیے لوگ ترس رہے تھے۔ دوسری طرف سے گورنمنٹ جو گوڈاؤنز تھے وہ راشن سے بھرے ہوئے تھے، مگر وہ لوگوں تک، عوام تک نہیں پہنچتا تھا ان کو، مگر وہ ریٹس نے کھایا تھا۔ تو اب سچویشن کو دیکھا گیا، لوگوں کو ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا تھا، تو اس وجہ سے PUCL نے PIL درج کیا سپریم کورٹ میں۔ پھر سپریم کورٹ نے آرٹیکل 21 میں رائٹ ٹو فوڈ، کھانا کھانے کا رائٹ سبھی کو ہے۔ آرٹیکل 21 میں جو رائٹ ٹو لائف ہے اور رائٹ ٹو فوڈ ہے، اس میں دونوں ہے۔ وہاں کے اسٹیٹ نے ایکسکیوز بھی دیا کہ ان کے پاس ایڈوکیٹ فنڈس نہیں ہے، لیکن اس چیز کو خارج کیا گیا۔ سپریم کورٹ کو یہ پتا تھا کہ وہاں کے گوڈاؤنز بھرے پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اسٹیٹ کو کہ سبھی لوگوں کو فوڈ پرووائڈ ہو۔ تو سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کو یہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ لوگوں کو امپلائی دے دیا جائے اور سستے داموں میں راشن دیا جائے، اور اسکول میں MDM لگا دی جائے تاکہ جو بچے ان کو اچھا کھانا ملے MDM میں۔ اور پھر کیا کیا گیا، اور دو جو ہے تو پھر فوڈ کمشنرز ٹو رپورٹ آن دا امپلیمنٹیشن آف گورنمنٹ اسکیمز، اور دو فوڈ کمشنرز کو اپوائنٹ کیا گیا کہ وہ جو گورنمنٹ اسکیمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 2 فوڈ کمشنرز کو بھی اپوائنٹ کیا گیا۔